सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ कृष्णा. ओके, सो बहुत पहले क्या हुआ कि एक कैरावान कहीं जा रहा था. कैरावान वो होता है कि मतलब जैसे ब्राह्मण्स वगैरह जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, विजडम कलेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं. सो एक कैरावान जा रहा था. समहाउ कुछ प्रॉब्लम आ गई और वहां पे उस ब्राह्मण को, ये जो पूरा ब्राह्मणों का एक कैरावान था, एक टोली थी, उसको कुछ प्रॉब्लम आई. वहीं पे एक यंग आदमी था, यू नो समबडी जो अपनी अडोलसेंट में स्टेप करने वाला था, बट अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था. तो जो भी ये प्रॉब्लम थी, इस यंग आदमी ने आके इन ब्राह्मणों की टोली को हेल्प किया. दे हेल्प्ड द ब्राह्मण्स, सो और द पुजारीज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम. तो जो ये ब्राह्मण थे, जो हेड थे ब्राह्मण के, वो बड़े खुश हो गए. ही वॉज रियली हैप्पी. ही टोल्ड दिस गाय दैट यू कम टू माई विलेज व्हेन यू आर रेडी, एंड बिकॉज यू हैव हेल्प्ड अस सो मच, आई विल वेड माई डॉटर टू यू. ओके, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करा दूंगा. एंड ही सेड कि वाह, आई मीन एक्सीलेंट. फिर दोनों अपने अपनी रास्ते में चले गए. जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, ये जो लड़का था, ये अपनी, पहले जमाने में शादी और ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, आज भी है, बट एट दैट टाइम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट पर्सन टू गेट मैरिड टू. एंड ही वाज रियली प्रिपेयर्ड कि हाँ, मेरा तो सॉर्टेड है, मैं इस ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा. जब मैं रेडी होऊंगा, विच इज व्हेन आई हिट पुबर्टी, आई विल गो एंड आई विल आस्क फॉर हर हैंड इन द मैरिज, बिकॉज दैट्स व्हाट द ब्राह्मण प्रॉमिस्ड मी. सो एज द टाइम केम, ही फेचेस दिस the other Brahmins who had promised uska village, and he goes and he visits him. He goes to the Brahmin, he says, hi, you remember me? मैं वो लड़का हूँ जिसने आपको हेल्प किया था. तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं रेडी हो जाऊं, आप अपनी बेटी का ब्याह, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे. सो मैं आया हूँ उसी प्रॉमिस के बेसिस पे, तो प्लीज वेड योर गर्ल टू मी. Brahmin said, what are you talking about? When did I make such a promise? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था. मेरे को तो ऐसा याद नहीं, बिकॉज उस चीज को साल बीत गया, यू नो, वो इतने साल बीत गए कि वो कह के, वो होता है कई बार, आप भूल जाते हो. सो ही सेड कि मेरे को तो याद नहीं है, मैंने कब कहा था. एंड आप है कौन? आई रिमेम्बर किसी ने तो मुझे मदद की थी, थैंक यू सो मच, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉमिस याद नहीं. दिस गाय सेज दैट आपने किया था, आपको कैसे याद नहीं है? सो द ब्राह्मण सेज कि कोई साक्षी है, कोई है ऐसा जो जिसने ये प्रॉमिस करते हुए मुझे देखा हो. तो ही थिंक्स, ये लड़का सोचता है. ही सेज कि ऐसा कोई फिजिकल साक्षी तो नहीं है, मतलब कोई ह्यूमन तो नहीं था वहां पे, बट एक मंदिर था कृष्ण जी का, तो कृष्णदेव, विष्णु जी मेरे साक्षी हैं. सो ही सेड कि ओके, विष्णु जी आपके साक्षी हैं, क्या यहाँ पे आके वो मुझे ये बता सकते हैं कि हाँ मैं साक्षी हूं और मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था? तो अगर कृष्ण यहाँ पे आ गए, उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था, तो साक्षी के हिसाब से मैं आपकी अपनी बेटी जो है वो आपसे ब्याह दूंगा. आई विल वेड माई डॉटर टू यू. सो दिस गाय गोज बैक टू वेरेवर. एक्चुअली ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था, जब इसने इसको हेल्प किया था, तो ये मिडवे में हुआ था. तो वो वापस गया वहां पे, टेम्पल में गया, कृष्ण जी के टेम्पल में गया, एंड ही टेल्स कृष्ण जी कि देखो कृष्ण जी, ये पूरा सीन है, और आपने बोला, आप ही साक्षी हो, आपके सामने उस ब्राह्मण ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बेटी का विवाह, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा. तो अब आप यू नो प्लीज, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, बिकॉज वो ब्राह्मण जी कह रहे हैं कि जब तक कृष्ण जी आके नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो साक्षी हैं, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था. तो लो एंड बिहोल्ड, कृष्ण जी कम्स, ही सेज ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बट एक शर्त है कि जब मैं रास्ते में जा रहा हूंगा, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा और तुम मुड़ के नहीं देखोगे. ओके, अगर तुमने मुड़ के देखा तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा. सो तुम मुड़ के नहीं देख सकते. तो दिस गाय वाज लाइक ओके फाइन, या दैट्स कूल, मैं नहीं देखूंगा मुड़ के. सो दैट्स वेयर दे बिगिन देयर जर्नी बैक टू द ब्राह्मण्स विलेज. नाउ अंडरस्टैंड, कृष्ण जी इज अ गोपाला क्या होते हैं? वो जो अपने हर्ड को यू नो चलाते हैं, चराते हैं, एंड अपनी काउज वगैरह को. तो उनके ना पैरों में घुंघरू थे, जैसे
बेसिकली घुंघरू क्यों होते हैं गोपालों के पैरों में, कि जैसे जो काउज होती हैं वो सुन के दे कैन इंटरप्रेट कि अच्छा मेरे वाला यहाँ पर है, गोपाल जो है, जो मेरा वो है वो यहाँ पर है. सो ये लड़का आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे ही वो सेटिस्फाइड कि हाँ कृष्ण जी हैं, बिकॉज वो छन छन जो आती है ना घुंघरुओं की आवाज वो आ रही थी. द वॉइस ऑफ द घुंघरूज was coming. So he was very satisfied that yes, Krishan ji is behind me. Now they are on the journey, they are on the journey. There comes a land which has a little soft soil. So what happened is that as soon as the soft soil came, that area came, Krishan ji's ghungru would not make any voice because it's soft soil. So this guy started to have a doubt. He's like, okay, the voice is not coming of the ghungrus. Maybe the Lord is not behind me. Maybe Krishan ji is not behind me. And he started to doubt. So he's still, this soft sand land was quite a bit. So, he was doubting. And then at one point in time, he couldn't contain his doubt and he looked back. As soon as he looked back, Krishan ji became a murti. Krishan ji became a statue. In fact, this is the story of one of the temples which is somewhere in India, and that temple is called Sakshi Temple. You can go and Google about it. So Krishan ji, who was supposed to be a Sakshi, who was supposed to be a witness for this guy, for the Brahmin, because this guy looked back, he became a statue and he was now स्थापित over there. He was there. So इस story में बहुत deep lessons हैं. There are a lot of deep lessons in this story and which are very relevant for this year. 2021 का जो transition है इस period के लिए they are very relevant. If there is any one of you who is watching me here or on YouTube channel who wants to attempt कि क्या lesson है, what is the lesson of it, please write in the comment section. Because maybe my interpretation is different and your interpretation could be different, and we might come up with something new. So according to me, these are a couple of lessons. And now what happens? I as a reader, as a transformation coach, I often come across people who say that is nobody listening to me? Does the universe not love me? And whoever is religious, does the God not love me? Do they hate me? Are they not listening? क्या वो मेरे साथ नहीं है? Is the God not with me? Why am I suffering? So often what is our culture? Our culture says that pray and then surrender. So this story tells us basically that doubt which came in the guy's mind, that even though he asked, which means that he prayed to Lord Krishna that you come and support me, but he had a doubt. At some point in time where he thought that he cannot listen to Krishna's ghungru, which he wasn't able to because there was soft sand, he had a doubt. And what does the doubt do? The doubt destroys faith, right? And please understand, now one way of looking at it is religiously and the other way of looking at it is esoterically. So let's go to somebody like me who's a transformation coach, who believes who also understands the way the brain works, or the neuroscience works. We create certain patterns in our brain which release chemicals, right? And those patterns are based on what do we most believe in. So if and that pattern will not become stronger if I keep doubting it. So let's say, if I have full faith in whatever you believe in, whatever I believe in, the universe, any deity, anybody, but then if I start doubting it, I am obstructing, scientifically, I'm obstructing the formation of that neuro pathway in my mind. And therefore, I will not get the full benefit of it. Does that make sense to you? So, half-hearted faith kuch nahi hota, which means that there is nothing like half-hearted faith. For example, if I have prayed for something and then at some point in time, the way I feel it should manifest or should be the process of its manifesting, it's not happening, that is another area where I will start having doubt. But I don't know the bigger picture. The universe, the higher intelligence, knows the bigger picture. So,
that for me, when I feel that it is not happening as the way I want it to be, that for me is the soft sand or the soft soil. So should I be doubting that higher intelligence? Should I look back such that now that neuro pathway gets obstructed? That's the lesson. In fact, there are a lot of these places all over the world where faith says that once you have prayed over them or once you have gone over there, don't look back. Another way of interpreting this story is that now that you have asked the universe, don't look at the past, what's behind you, what has happened. Because now if you will base your faith on what had happened in the past, what did or did not happen in the past, or your own past experiences, then once again, what will happen is that neuro pathway will get obstructed. And instead of the pathway of what you had asked for, what will get created is the pathway of doubt. Stone ban jata hai wo. Krishna ji stone ban gaye. Krishna ji became a statue. What does that mean? That neuro pathway became a statue. You know, it did not get the momentum that it was supposed to get for our brain to release such hormones whereby then I can become a receiver of that energy or of that vibe, which will make this manifestation happen for which I have prayed. Beautifully explained in a story. And for 2020 it is very relevant because a lot of us have been through tough times. You know, for a lot of us we have seen people suffering, close ones suffering, passing away, suffering in hospitals, jobs going, marriages breaking, relationships coming to an end, economically. So these are the 4 pillars of our life, right? One is us, the other is our peace of mind, next is our health and relationships. These are the 4 pillars and work that we do which gives us purpose. So all 4 were on the stages of transformation. So we all have gone, a lot of times when I hear the stories, they're very sad. This is the time to build our faith. This is the time to ask for things with deeper faith. And I thought that this story is very relevant for the transition phase that we are in. And we feel that 2021 may suddenly something miraculously change ho jayega. Well, there will be a couple of changes. Yes, hope is around the corner, right? But it's not like you will sleep in a different way and you will suddenly wake up all transformed on 2021. So this is another thing which I wanted to tell you. So have you built your faith? Listen, we all have faith. We have faith in the negative things. The idea is to build the faith in the positive things. Doubt के लिए हर किसी के पास faith है. Krishna के लिए faith नहीं है. Krishna is what? Basically consciousness and solutions and making our life better, so on and so forth. So that's the story that I wanted to share with you. I hope it helps you. If you're watching me on YouTube channel, please subscribe, like and share. Spread this hope and spread this message to your friends and family. Help them. Because 2021 is actually a year of building up a team, of collaborating, of not just helping yourself but helping others as well, of gaining experiences, of working with people. So help them. Namaskar, Radhe Radhe.